Dear student, welcome back to Dr. Shrikant Pharmacy channel. Please like, share, subscribe and hit the bell icon for the latest pharmacy video. So today I came with a topic legal requirement to start a drug store. It may be a wholesale or it may be a retail store. Okay, ये क्लास हम लोग लेने वाले जो भी अगर नया मेडिकल स्टोर और नया होलसेल आप खोलना बोले तो क्या क्या लीगल डॉक्यूमेंट्स की लीगल प्रोसीजर कानूनी का प्रोसीजर क्या रहता है, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, उसके लिए आज एक क्लास से हम लोग क्लियरली मालूम कर लेंगे. ओके, सो द फर्स्ट वन इज अ मिनिमम क्वालिफिकेशन टू ओपन एनी रिटेल स्टोर. A registered pharmacist with the state pharmacy council is a very much important. Okay, and he should pass it in a degree as an B Pharma or a D Pharma in a recognized college or institution. The college recognized means it should be approved by the Pharmacy Council of India. So that is a very much important for the degree where you are getting, whether diploma or degree, the certificate or qualification you are getting na, so that college or institution must be PCI approved. So then only you are eligible for the making the become as a registered pharmacist. So any registered pharmacist with the state pharmacy council is a minimum requirement, and if you don't have any the qualified person means you can also be opened a medical store by making as a partner, or you are borrowed from or taking a rent from the qualified persons. Okay, for example, proprietor will be separate and qualified person will be separate. So owner or proprietor will be one person and qualified person will be one person. So two options are there. Qualified person along with the owner is one option. Second one is owner is different and qualified person is different. Both are the option is there for the open of any retail store or the wholesale store. So when come across wholesale, no need of any registered pharmacist, no need of any registered pharmacist, but the candidate must have the SSLC or matriculation passed, one thing, and 4 years of experience in a drug handling. That is a very much important for the to start the new wholesale drug store. Very clearly I am mentioning, to open a retail medical store, one, you should have the registered pharmacist with respect to the state pharmacy council. Okay, and you should have the qualification a minimum as a diploma pharmacy or degree pharmacy, that is a B Pharma. Okay, or M Pharma. Okay, so that should be passed in a recognized institution which is approved by the Pharmacy Council of India. So this is a minimum qualification to open a new drug store. And next comes the what is a minimum space required for the as an open a retail store or a wholesale. Come across us the for the retail store minimum size which is required is the 10 square meter, and will should be proper storage for the refrigeration and normal storage, and sufficient racks to keep all the medicines in a systematic way. So in last class I explained the layout design of the retail store or the wholesale or the drug store. So there I was discussed what should be there for minimum the success of the pharmacy of any medical. Okay, and with respect to retail it is a very essential these things. Whereas in come across the wholesale medical store or wholesale agency are there, the requirement space is a little bit larger and spacious for the accommodation of the all the medicine, the proper storage. Hence the retailers is minimum required is 10 square meter and proper storage, and along with the facility for the refrigerator to make to maintain the required condition for the proper storage of particular medicines, and number of racks which is necessary for keep all the medicine in a systematic manner. So this is about the second important, the minimum space. And third most important is that how to get the license. Okay, how to get the license, what are the minimum requirement which has to be submitted to the drug licensing authority. So the first is application for the grant of license
is very essential, because in some kirani or vegetable shop there is no need for any specific licenses. For specifically when come across the profession of pharmacy or medicine selling, whether you want to sell or stock or distribute of drug, you should get the license. You should get the license. Without license you cannot sell or stock or distribute the any of the medicines. So that is the license is given by the licensing authority of the particular state or particular district wise, okay, or zonal wise will be the authority will be there. They are the main power for getting the license. So any selling, any stocking, any distribution of drug, very mandatory, you require a proper license. Without license you cannot do the any service of the selling or distributing or storing of the any medicines. So what are the documents required to get the license? Okay, to get the license, what are the documents you have to be produced? Let me discuss one by one. First one, application form number 19. Application form number 19, that is in form of a duplicate with respect to Drugs and Cosmetic Rules 1945. So that is 2 copies of application form number 19. Second is fee receipt of rupees 40 each category of a license, means how many types of the schedule you want to license. So based on that amount you have to be paid. So this 40 rupees was earlier fees, but it is now revised. And third is an attested copies of diploma or degree, that is B Pharma certificate, that is very much important. Next, practical training 750 hours. Okay, whether it is maybe government hospital or maybe a chemist, which is recognized by the or approved by the Pharmacy Council of India. 750 hours after the completion of D Pharma or during the course, or after the completion of the B Pharma or during the course, you have to be exposed to 750 hours with different varieties of the department of the hospital. So hence it is very mandatory. Next is a registration certificate. Once the qualification is completed, you will get the particular certificate from the college with recognized board or the recognized university. After that you have to make the registration with the State Pharmacy Council. So this registration is very much important for getting the license. So wherever you study, you can make the registration in with respect to your state. For example, if you are studied in VL College of Pharmacy, it comes under the Raichur and it comes under the Karnataka. So this candidate, after the completion of course, he can make the registration wherever he want, maybe in Maharashtra, maybe in Andhra Pradesh. Qualification is important for get the degree certificate, and registration where you want to open a store is very much important. So registration certificate is very, very mandatory. Next comes the SSLC certificate. Next comes the proprietor is not a qualified. Then another important, I told in the beginning itself, if the owner and the proprietor and qualified person are different, means so you have to make a partner's deed, or that is nothing but the proprietor is not qualified, you need to be a affidavit, separate affidavit you have to make the owner. So this shop is not having the qualified person as an owner, so hence we are appointing as the qualified person is separately and owner will be separately, you have to make the affidavit. Next, wholesale are there. So if the wholesale are there, there is no need all these things, and only you required SSLC plus 4 years of experience certificate, that is enough, and remaining the minimum the document whatever the required, so that will be fulfilled for success of the open of the medical store. And next comes the layout plan along with the signature, that is another important. So in the last video we explained the layout, so that layout in a blueprint you have to taken and the signature by the owner, proprietor and submitted. In the medical store or the wholesaler, if any partners are there, again you need a one deed, that is called as a partner's deed. So if the shop is containing the more than 2 members are there, then you need to be produce the partner's deed. Next comes the building plan. So building plan is nothing but the layout plan is different, building plan is different. Building plan owner who will be there,
so he has to give the document for the proof of that owner, and with respect to municipality number, all the street area etc will be documents is necessary. And if the owner is not the premises of the where you want to selected site, in that case you have to take the affidavit from the owner, this shop is given rent to so and so person, so that you can entertain the, or you can this premise can be used for the selling of the goods. So that affidavit is mandatory. Next comes the affidavit of non-conviction with on a 3 rupees non-judicial stamp paper with duly signed by the first class magistrate. So this is another affidavit, or you have to make the documentation with the 3 rupees non-judicial stamp paper with a duly signed by the first class magistration. After this, application form and all these documents are submitted to the drug administration authority, and these drug administration authority will be scrutinizing all the document whether the given is correct or not. So if they are correct, so they personally visit to the particular site, and if they are satisfied, they will issue the license for the selling of the goods. Again, in license two types are there, retail is different, wholesale is different. So form number 20 is with respect to you can sell or distribute other than the schedule C and C1 drug. Whether the form number 21 is the schedule which comes under the schedule C and C1 drug. Similarly for the wholesaler also, the form number 20B is other than schedule C and C1, whereas form number 21B is schedule C and C1 drugs. So these are the main procedures to be followed for the getting the license for to open a new medical store. ये क्लास से हम लोग ये जानकारी ले रहे, लाइसेंस लेना बोले तो क्या क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट्स रहना, ओके क्या क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट्स रहना. सो पहली बात तो क्वालिफिकेशन बहुत ज़रूरी है, क्वालिफिकेशन इज़ बहुत ज़रूरी है. मिनिमम डी फार्मा और बी फार्मा ज़रूरत रहता है, और रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट रहना. सो वो भी अपना ये जो स्टेट से जो कहाँ पे खोलना चाहते हो वो स्टेट से आपका स्टेट फार्मेसी काउंसिल से रजिस्ट्रेशन होना. अगर क्वालिफाइड पर्सन आप नहीं रहे तो दूसरे लोग क्वालिफाइड पर्सन है, आप ओनर रहे तो वो भी सहूलत है ओपन करने के लिए मेडिकल स्टोर. एज एन ए द पर्सनल द डॉक्यूमेंटेशन is necessary for getting the QP is different, owner will be different. वो टाइम पे क्या हो जाता है, अगर समझ लीजिए होलसेलर दे, होलसेल के लिए आपको रजिस्ट्रेशन फार्मासिस्ट ज़रूरत नहीं, आप SSLC मिनिमम पास रहे तो बस, उसके साथ आपको 4 साल एक्सपीरियंस रहे तो बस इन ड्रग स्टोर डिस्पेंसिंग में आप होलसेल खोल सकते हैं. लेकिन रिटेल खोलना बोले तो आपको पूरे मिनिमम एक क्वालिफाइड पर्सन ज़रूरी है. अगर क्वालिफाइड पर्सन और ओनर दोनों सेम रहे तो सो वो बहुत ही अच्छा. अगर क्वालिफाइड पर्सन अलग ओनर अलग रहे तो ये भी आजकल गवर्नमेंट इज़ गिवन द प्रायोरिटी. ओके, एंड स्पेस कितना रहना बोले तो रिटेल शॉप खोलने के लिए आपको 10 स्क्वायर मीटर होना, और प्रॉपर स्टोरेज रखने के लिए रेफ्रिजरेटर, रैक्स, बहुत सारा चीज़ ज़रूरत है. होलसेल के लिए आप जैसे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपका स्टॉक कितना बढ़ा रहे, इससे ज़्यादा वो रहना पड़ता है. एप्लीकेशन फॉर द ग्रांट ऑफ लाइसेंस, मतलब आप जो भी दवा रहता है ना सेल करना, स्टॉक करना, डिस्ट्रीब्यूट करना बोले तो कंपलसरी आपको लाइसेंस की ज़रूरत रहता है. बगैर लाइसेंस का आप डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं करते, सेल भी नहीं कर सकते, ये बहुत ज़रूरी है. जैसे अलग दुकान रहता है, किराने जनरल स्टोर रहता, उसके लिए उतना ज़रूरत नहीं, लेकिन जो प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी में बहुत ही ज़रूरी है. रिटेल रहने दो, होलसेल रहने दो, आपको जो लाइसेंस ज़रूरत है, विदाउट लाइसेंस यू कैन नॉट बी डन. सो लाइसेंस के लिए हमको क्या क्या डॉक्यूमेंट ज़रूरत पड़ेगा बोले तो एप्लीकेशन फॉर्म नंबर 19, फी रिसिप्ट ऑफ 40 रुपीज़, अटेस्टेड कॉपीज ऑफ डिप्लोमा और बी फार्मा सर्टिफिकेट होना, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग 750 आवर्स ट्रेनिंग करते हैं ना वो होना, वो भी अगर हॉस्पिटल में रहे तो या केमिस्ट भी के पास भी करे तो भी चलेगा, बेस्ड ऑन द अप्रूवल ऑफ द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया. रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जैसे आप पढ़े रहते हैं ना, उसका पढ़ने के बाद आपका सर्टिफिकेट मिलता है, डिग्री या डिप्लोमा सर्टिफिकेट, उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट करना विथ रेस्पेक्ट टू स्टेट फार्मेसी काउंसिल में. सो आप कहाँ पे खोल रहे हैं उसकी स्टेट का जो स्टेट फार्मेसी काउंसिल रहता है ना, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराए तो आपको लाइसेंस मिल जाता है, आप बिकम एज एन रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हो जाते हैं. उसके बाद SSLC सर्टिफिकेट होना, और प्रोपरेटर इज़ नॉट क्वालिफाइड मीन्स प्रोपरेटर और क्वालिफाइड पर्सन अगर अलग रहे तो सेपरेट आपका एक एफिडेविट बनाना पड़ता है.
अगर होलसेल रहे तो आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ज़रूरत नहीं पड़ता, SSLC सर्टिफिकेट और 4 साल का एक्सपीरियंस रहे तो बहुत काफ़ी है। लेआउट प्लान बहुत ज़रूरी है विथ सिग्नेचर ऑफ द ओनर एज वेल एज द इफ प्रोप्राइटर अलग रहे तो। पार्टनर डीड 2 से ज़्यादा लोग रहे तो आपको पार्टनर डीड का वो भी अलग डॉक्यूमेंट देना पड़ता है। बिल्डिंग प्लान का भी बहुत ज़रूरी है, कहाँ पे खोल रहे हैं, आपका खुद का रहे तो आपका प्लान देके वो खुद का है बोल के बोलना। अगर रेंट को लिए तो ओनर से एक अफिडेविट बना के वो प्रोड्यूस करना, उसका रिसिप्ट भी अलग रहता है। affidavit of non-conviction with the 3 रुपीज़ नॉन जुडिकल स्टैम्प पेपर विथ दिल्ली साइन करे तो मजिस्ट्रेट जो रहता है ना क्लास 1 मजिस्ट्रेशन, वो 3 रुपीज़ स्टैम्प पेपर में ऑथोराइज्ड कर लेना। उसके बाद एप्लीकेशन ये पूरे सारे डॉक्यूमेंट सबमिटेड टू ड्रग लाइसेंसिंग अथॉरिटी एंड जब देने के बाद लाइसेंसिंग अथॉरिटी पूरा डॉक्यूमेंट चेक करते हैं, अगर सही रहे तो जो साइट बताए रहते हैं वो साइट को आके पूरा फिर चेक करते हैं साइज गीज बरोबर है कि नहीं बोल के, सब सही रहे तो वो लोग सेटिस्फाइड हुए तो आपका लाइसेंस दे जाते हैं। लाइसेंस भी 2 तरीका का रहता है, रिटेल का अलग रहता है, होलसेल अलग रहता है और अलग अलग रहता है। फॉर्म नंबर 20 रहता ना, वो जो रिटेल रहता है वो लाइसेंस क्या हो जाता है C एंड C1 से अलग जो दवा रहता है ना वो भेजने के लिए रहता है। और फॉर्म नंबर 21 रहता है ना वो भी रिटेल के लिए रहता है, वो शेड्यूल C एंड C1 रहे तो वो भेजने का। सो यूजुअली 20 एंड 21 विल बी गिवन फॉर द रिटेलर फॉर सेलिंग ऑफ द गुड्स शेड्यूल C एंड C1 एंड अदर देन शेड्यूल C एंड C1। फॉर्म नंबर 20B एंड 21B जो है ना होलसेल के लिए उनको भी वैसा ही रहता है, शेड्यूल C एंड C1 के लिए अलग रहता है, शेड्यूल A अलग रहता है। मैं समझता हूँ एक क्लास से आपको बहुत ही सरल से आसान से आपको लाइसेंस लेना बोले तो क्या चीज़ ज़रूरत है बोल के सही से मालूम हुआ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।